start the recording. Okay. So how to write synopsis for Cpsp? One or two things that I want to start with this topic before I start this topic is one reason why I feel that all of the people who are writing the synopsis for IMM examination, I should be able to tell them briefly what exactly they have to write on those two pieces of paper that is accepted by Cpsp and there is no problem in it. So whatever the research methodology workshop Cpsp gives you, or if you are enrolled and you attend there, they are more focusing because they have to entertain all the specialities. Usme medicine, surgery, gynae, psychiatry, everything comes in. So all the trainees go there, what to write about the synopsis and how to write about it. So Cpsp focuses more on research methodology, where they try to ensure that you are able to understand the statistics, the what types of various studies available, how to conduct the study, uh, the analysis of the results, what you have to write in the results, things like that. They don't make people understand that unfortunately, because the candidates have to write two pieces of paper, and the most important paper of those two pieces of paper is the introduction. So nobody teaches you how to write a one page of introduction. The rest of the stuff is always, you know, कि हमें इसमें ये headings डालनी है, इन headings के अंदर हमें ये चीजें mention करनी. So the three things that are very essential for all of you people to understand is, one, you have to make sure that whatever you are writing, it has to be very simple, because people in Cpsp are not psychiatrists. They are either statistician or clinician from other domains who are checking your synopsis. So it has to be very simple to make other people understand that this is what you actually want to do. Second important thing is topic selection. Now, whenever people ask about the topic selection, they come up with the bright and brilliant ideas. Okay, clinically, we should see this and impact of this on this and how to assess this. I know that I understand that these topics are important and very relevant, but for synopsis, the topic has to be very, very simple. Because the idea is to make sure that you understand the research, how to conduct a research. The idea is not to make you a researcher, you are actually a clinician, but you should be able to understand what research is, and in times to come, if you are interested in that topic, you have the basic knowledge about it. So this is another idea where people feel that it is essential. So you have to know this. So the title has to be very simple. Introduction should be simple as well. And the rest of the stuff, most of the teacher teaches you, and the Cpsp teaches you as well, what are the headings in it. So let's proceed and talk about it. So before starting, to work on dissertation article or FCPS trainee has to send a synopsis to RTMC and get it approved. The synopsis is a brief outline about, they say 4 A4 size pages or 1000 words in the maximum limit of your future work. Ideally speaking, they should not be more than 2.5 pages. 2 to 3 pages is the best. If you have additional document, you can attach it as an appendix. So RTMC requires you to write few pages as a synopsis for your research protocol. What are basically the structure of synopsis? One, the official requirement. So the official requirement says that you should have 2.5 pages of typewritten paper, written in a simple language, explaining your project
going for all the relevant details related to the project, and coming out with some results and conclusions and discussions. The reference, ideally speaking, should not be more than 5 years old. Now, the problem is most of the psychiatric residents write the reference, the diagnosis on the basis of ICD-10. That is 27 years old. Fine, it's acceptable, but ideally speaking, the references should not be more than 5 years old. So whatever references you are typing, they should be recent most. And if you are not able to find appropriate references for your research design or your study, this means that there is some problem in it. So make sure when you start writing references, start selecting a topic, the references should be available for last 5 years. If they are available before 5 years of time, so there are some historical references, you can quote them, but expected is that 60% of the references should not be more than 5 years old. 60%. This is their expectation. So the official requirement, 2 to 3 pages. References should not be more than 5 years old. Research methodology. Now you all have, probably most of you have done the research methodology workshop in Cpsp, so I won't be focusing on it. Literature review. Now, in dissertation, literature review comes as a separate heading in the form of discussion. But in synopsis, the literature review comes in introduction and objectives, hypothesis, and the title. So I am going from the other side, but title simple with single objective. Single objective. There should not be two objectives in one title. So one objective, one title. So you want to assess the frequency of depression in Tertiary Care Center of Lahore. One objective. Objective is डिप्रेशन को असेस करना है एक टर्शरी केयर सेंटर में. एक टाइटल, एक टॉपिक, एक ऑब्जेक्टिव. Always remember this is what it is. Hypothesis. So hypothesis ये है कि जी in simple form, when I'll be assessing depression in tertiary care center, I am hypothesizing that whatever the prevalence of depression was there earlier found in tertiary care center, my study will be either better with them or showing the same results, not different than the others. Now, this is something reinventing the wheels. So we all know serotonin is one of the cause of depression. So if you start searching as a title, what is the cause of depression? Serotonin is the cause of depression. This is your hypothesis. It's usually not accepted. So something little bit different than the usual, you have to know. So like you can try a new topic like frequency or the symptoms of ADHD in tertiary care centers. One topic, one objective, one methodology, simple, and outcome is okay. So you will find the references of symptoms of ADHD in people, adult or children, and you will be able to find recent references as well. It won't be difficult to find it. But if you choose a topic which is relatively different than usual, then finding references would be difficult. So I never recommend my trainees to find a topic which is unusual. It has to be very simple, clinically applicable title. जो आप रोजमर्रा जिंदगी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स देख रहे होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड कोई चीज हो ताकि आपको बाकी प्रोसेस करने में कोई दिक्कत ना हो. Recently, one of the trainees asked me that I want to do topic on ADHD. And again, जैसे मैंने बताया, ADHD in outpatient department. Fine, this is a good result. Then added up ADHD and conduct disorder in tertiary care centers. Two objectives, double title, complicated, it will be difficult to perform. So don't go for it. Go for a simple single title, single
objective and single mission to complete the task. Frequency of conduct disorder in outpatient department of tertiary care center. Fine. Frequency of conduct disorder in tertiary care center. Fine. Frequency of OCD along with depression in outpatient department of psychiatry, blah, blah, blah. Simple, doable. So always try to make sure that your title is very simple so that the people in the CPSP who are not psychiatrists would be able to understand. Okay, fine. ये बच्चा जो है ये OCD में सिम्टम्स देखना चाह रहा है कि कितनी कंपल्शंस कितने परसेंट कंपल्शंस होती हैं. फाइन. सिंगल टाइटल, सिंगल ऑब्जेक्टिव, OCD आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में आती है, सैंपल साइज आपको मिल जाएगा. बिल्कुल सिंपल इसको बनाना है. ओके, देन दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इंट्रोडक्शन. जब आप साइनॉप्सिस का पहला पेज लिख रहे हैं, so it should contain brief background of the selected topic. Background. So you have chosen a topic like frequency of OCD in outpatient department of services hospital or Jinnah hospital. So the background is what is OCD, how prevalent it is, what is the OCD complicated with, OCD presentation, OCD outcome, OCD management, OCD other things. Everything should be related to that. The first two paragraphs of your introduction are related to the disease process that you are targeting, whatever the disease process you are targeting. So OCD, उसकी prevalence, उसकी frequency, उसकी outpatient department में जो जितनी भी वो नजर आती है वो related to some studies conducted in that topic. Sorry. Is it okay? Should I continue? Okay. So आपने टॉपिक लिया OCD टर्शरी केयर सेंटर में देखना है, तो आपने लिखा कि OCD की प्रेवलेंस इंडोनेशिया में की गई आउटपेशेंट टर्शरी केयर सेंटर्स में और उसकी फ्रीक्वेंसी 1% इन जनरल पॉपुलेशन थी आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में. सिमिलर स्टडी कंडक्ट की गई यूएसए में और उन्होंने भी देखा कि जी वो 3% थी. सो दो वेरिएशंस, दो फिगर्स आपने दे दी, दो आपने उसके बैकग्राउंड के हिसाब से बात कर ली. सो आपने कहा जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी व्हिच इज क्वाइट प्रेवलेंट इन जनरल पॉपुलेशन. Studies were conducted according to it, and it was found that it is relatively present in 1% of general population in patients with presenting in tertiary care centers. पहला पैराग्राफ खत्म. OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो जनरल पॉपुलेशन में 1% है. उसकी स्टडीज इंडोनेशिया में, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में कितनी है और कैसे आमतौर पे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं. सो ये पहले दो पैराग्राफ छोटे छोटे 4-4, 5-5 लाइनों के, दे हैव टू बी वेरी सिंपल. Whatever the topic you have chosen, they should be explaining the frequency, the prevalence, the background information related to that disease. Obsessive compulsive disorder is an anxiety disorder which usually is chronic, runs in families, and the frequency of obsessive compulsive disorder is 3 to 5% in tertiary care centers reported in Indonesia and USA, or whatever you want to write it. One paragraph. Second, in obsessive compulsive disorder, most frequent symptoms which are seen are this. Reference. पहले paragraph का reference, दूसरे paragraph का reference. Simple, straightforward, दो पैराग्राफ आपके हो गए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के. It must identify the importance of the study, its relevance and applicability. So as obsessive compulsive disorder is a common disorder, it is seen very frequently in tertiary care centers, and the treatment is complicated, the outcome is complicated, the prognosis is whatever, good or bad. So I thought that this study should be conducted in our setup.
Very simple. It must clearly state the purpose of the study. The purpose of the study to find out the frequency of symptoms of OCD. Simple, straightforward, दो पैराग्राफ. So title बिल्कुल सिंपल हो, पहले दो पैराग्राफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के हों और साथ में उनमें ये बताया जाए कि वो कितना फ्रीक्वेंटली ये सिम्टम, जो भी स्टडी आप करने जा रहे हैं उसमें ये कितने फ्रीक्वेंटली ये चीजें देखी जाती हैं. साइनॉप्सिस हेडिंग्स, ये आप सबको पता है इसलिए मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हेडिंग्स होती हैं जी, टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, मटेरियल्स एंड मेथड्स. So the most important part that I want to re-emphasize is that whatever you are writing as a psychiatrist, it should be understandable to the people who are non-psychiatrist. One, it should be simple. अपनी जबान में उर्दू में सोचो कि क्या लिखना चाहते हो. अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि डिप्रेशन में सोमैटिक सिम्टम्स कितने होते हैं. अच्छा ठीक है, डिप्रेशन में सोमैटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो अगर कहीं और स्टडी हुई तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये परसेंटेजेस हैं. सो वो आपको मेंशन करना है डिप्रेशन कितना कॉमन है, सोमैटिक सिम्टम्स कितना कॉमन है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कॉमन है. ये फिगर्स और ये स्टैटिस्टिक्स आपने पहले दो पैराग्राफ में लिखनी. सो मेजर टास्क आपका टाइटल और पहले दो पैराग्राफ का साइनॉप्सिस में क्लियर हो गया, और understandably whosoever is reading it would be able to understand, okay fine, this is the topic, these are the two paragraphs giving the background information. Now let's see how he proceeds. Objectives of the study, operational definition. Operational definitions, whatever you are writing, it should be again title of the study, और आपका जो क्रक्स ऑफ द मैटर है उसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं टेक्निकल, ओसीडी उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने कहां से ली, या डिप्रेशन उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या थी, और डिप्रेशन के साथ सोमैटिक सिम्टम्स उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आप क्या डिफाइन कर रहे हैं वो आपने बताना है. हाइपोथेसिस आपको टाइटल के हिसाब से बनाना है. मटेरियल, मेथड्स, इस पे बात करते हैं. Operational definitions, usually most of the people make a mistake of writing an operational definition. So they pick up the things from various places. You don't have to do it. As I told you earlier, be very simple and straightforward. So operational definition should be your diagnostic classification system definition. Most of the synopsis for Cpsp, they require operational definitions because it is easy for them to understand that this is the definition of OCD, this is the definition of somatic symptoms, this is the definition of depression, this is the definition of compulsion, this is the definition of whatever you want to write. Morbidity, this encompasses a number of aspects, for example, prolonged hospital stay, severe pain, immediate complications, long-term sequelae. The first two paragraphs that you have started in the introduction gave the background and the information. Now the third paragraph is related to the consequences. So as I mentioned earlier, major depressive disorder, somatic symptoms. If the major depressive disorders with somatic symptoms presents in the clinical setting, it is complicated, difficult to evaluate, have bad prognosis, we have to address it with biopsychosocial model of care, blah, blah, blah. तीसरा पैराग्राफ इससे related introduction में आ गया. Although I am putting it here in an operational definition, but you have to write the third paragraph of your synopsis related to the outcome and the consequences of the topic that you have chosen. And then a research must define how vague term will be measured. Precise way of measurement. So the obsessive compulsive disorder is usually measured with two types of the scales which are available in Pakistan. One, Padua, and two, Yale-Brown Obsessive Compulsive Inventory. I am using Padua because it is translated and validated in Urdu, easy to understand, objectivity is there, sensitivity and other aspects of the scale are absolutely okay. So पहले दो paragraph,
तीसरा पैराग्राफ उसके आउटकम से रिलेटेड, चौथा पैराग्राफ जो आप स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रिलेटेड कि ये स्केल में ये खासियत है, ये बुराई है, ये अच्छाई है, और ये स्केल उर्दू में है, आसान है, दिया जा सकता है, मरीज समझ जाएगा, स्कोरिंग मेथडोलॉजी आसान है। 4 पैराग्राफ बन गए आपके। आगे चलें। Reasons for carrying out research, the way, aims and objectives. Again, you people have done the aims and objectives. I'm sorry, I'm not able to see the chat box when I'm opening the shared screen. So whatever the questions you have, we will definitely respond to it afterwards. Okay. Oops, sorry. Come on. Sir, please turn your video on. Somebody has requested. मेरी वीडियो ऑन है। वो डॉक्टर साहब ने पहले ज्वाइन किया था तो उनकी वीडियो इसलिए फ्रंट पे आ रही है, वैसे मेरी वीडियो ऑन है। नजर नहीं आ रही ऊपर कॉर्नर में? मैं इसको स्पॉटलाइट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो गई तो। नो सर, आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही, आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं दिखाई नहीं दे रहा। ओके, मैं दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि प्रॉबेबली वही बात के अगेन वो हाईलाइट उधर हो गए। ओके, लेट मी चेक इफ आई विल बी एबल टू डू दैट। अच्छा, मैं अपने आप को नजर आ रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। दिस इज सरप्राइजिंग। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? आपको मैं नजर आ रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले आ गए थे ना, आप एग्जिट करके जरा दोबारा ज्वाइन कर लें, मेरी वीडियो आ जाएगी। नहीं, सुफियान। ओके, सुफियान अगर एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो मेरी वीडियो आ जाएगी होपफुली। नहीं आएगी तो मैं दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ। मैं सुफियान को रिमूव किया। ओके, अब मैं नजर आ रहा हूँ कि अभी भी नजर नहीं आ रहा? सरप्राइजिंग। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। नो, ये भी नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा ज्वाइन करूं अब कुछ बात बनी कि अभी भी नहीं बनी? Sir, I think. हाँ, बताओ। I can see you, sir. तो इनको rejoin कर लें, जिनको नहीं visible. जिनको विजिबल नहीं है वो रिजॉइन कर लें। ओके, हाँ जी आप सर, नजर आ रही है? कंटिन्यू सर। आपको नजर आ रहा है? जी जी सर, बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो till now, what I have suggested to you that when you write a title, you have to write 3 paragraphs. First 2 paragraphs are related to the disease, its frequency, its prevalence in various settings, the title of the study, what you are trying to aim. Third paragraph is related to the scales that you will be using in the again, and what is their priority, how the scale is sensitive and easy to administer, blah blah, usse related reference. Fourth paragraph, methodology, how. So the fourth paragraph, state the main planks of your thinking or proposed arguments and outline how you intend to put them together. In writing this part of the synopsis, it is helpful to start by setting out their thoughts as an informal point brief. This is the most important part. Most of the time people say कि हम जैसे बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड लिखा होता है, आप उस तरह लिखें नहीं। एक्सपेक्टेड ये है कि सिंपल लैंग्वेज में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू मेंशन few statements. You have chosen this study because obsessive compulsive disorder and its scales are available. They are easy to administer. It's a complicated disease. Prognosis outcome is compromised. So simple, बिल्कुल
But if you decide to adopt this approach, you should bear in mind that thesis is not the same as research paper. It is seldom possible to reach firm conclusion and you are required to recommend a course of action. So आपके synopsis में और एक research paper में फर्क है. रिसर्च पेपर एक इनोवेटिव आइडिया एक्सपेक्ट किया जाता है और उस पे काम होता है. आपके साइनॉप्सिस में जो डेजर्टेशन है, जो एफसीपीएस की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको कोई इनोवेटिव आइडिया देके उसके कंक्लूजन पे पहुंचने का नहीं कहा जा रहा. कर लें बहुत अच्छा है, लेकिन actually it is very difficult task, and most of the people at trainee level, when you people are engaged in the exam situation, you have to prepare for the exam, you have to study as well, you have to do the clinical jobs, night duties, day duties, blah blah blah. It is usually difficult. So in most of the countries where good research papers are published, researchers are just the researchers, they're not clinicians. So even as a psychiatrist, the clinical responsibility is less and research time is more, so I'm engaged in research. This happens in UK, this happens in Canada, so big names in research. पाकिस्तान में डॉक्टर आतिफ रहमान का बहुत नाम है चाइल्ड साइकियाट्री की रिसर्च में. He is a full-time researcher. He is not actually a practicing clinician psychiatrist. So you have to understand here that, and the Cpsp also acknowledges it, because they are not expecting you to be a researcher. They're expecting you to be a person who is able to understand research and do some research and then able to continue the research work after clearing or passing the FCPS. So make sure that you keep things very simple. Choice of research topic. Again, I mentioned to you a little bit briefly, choosing a research topic or a title, getting started. It perhaps the most difficult part of writing a synopsis. It has to be simple, crispy, straightforward, whatever you are doing in a day-to-day clinical setting. Framing the title. Your title should summarize your topic and should not be ramble over what you think, illuminated by snippets of what you have read. So हम जब साइकियाट्री पढ़ रहे होते हैं किताबों में, तो बेशुमार बातें, हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमागों पे सवार होती है, जो हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है. फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में delusions of control कितने % हैं. Fine, this is one thing. But if you start thinking about it, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जितने पेशेंट आ रहे हैं उनमें फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कितने लोगों में हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है. टाइटल डबल हो गया. एक रखें, सिंपल रहेगा. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कितने पेशेंट्स में, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मौजूद होते हैं. फाइन. उसका अगला स्टेप, परसेंटेज कितनी होगी, उस परसेंटेज में मजीद एडिटिव्स क्या होंगे, कौन से कॉमन होंगे, ये फर्दर कॉम्प्लिकेट करेगा. सो टाइटल, फिर बात करूंगा, दोबारा से फोर्स कर रहा हूं, टाइटल शुड बी वेरी सिंपल, सिंगल ऑब्जेक्टिव एंड डूएबल जॉब. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में अगेन कमिंग बैक, मैंने आपको पहले 2 पैराग्राफ का बताया, तीसरे पैराग्राफ का बताया, स्केल के बारे में बताया, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ी सी दी, और ये सारा कुछ रेफरेंसेस के साथ आप कोट कर रहे हैं. There is no specific format for this, but by following this guide, you should ensure that main aspects of research proposals are covered. In preparing your synopsis, you should restrict the size of your research area in line with the length of the dissertation required by the university, by the college in this situation. Brief, precise, and adequate. Focus is brief, precise, adequate. 150 to 175 words. Background information. What work, if any, already exists in this area? What are its strengths and deficiencies? How would further work advance our knowledge of the wider area of the study? Is an entirely new area of study being opened up? Why this is important?
numbering of reference, if any, should start from here. Now, fourth paragraph of your synopsis should be, again, how would further work advance our knowledge of the wider existing area? So OCD, its prevalence, symptoms, scales, evaluation and complications associated with OCD, and the importance is that this research is conducted to understand the frequency of obsessive compulsive symptoms which are present in our society, in our culture, in our value system, considering blah 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 blah. ये चौथा पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन का लिख दिया. सो चार पैराग्राफ, चार चार लाइनों के आपके इंट्रोडक्शन का मेन क्रक्स बन गया. बीच में एडिटिव्स दो तीन चीजें और इस तरह की डाल दें, दैट्स इनफ. And references, as I told you, they should be not more than 5 years older. Consideration where you will find the information. Most of the references are available in the website. Now, these days, the online articles, they are actually paid articles. So what I always recommend to the trainees is, whatever references you want to put, these references ideally should be from the research available on the net. And if you are not able to find the full articles, then just abstracts can be quoted as the reference as well. If you are able to find one article, which is good, कहीं से article relevant नहीं मिल रहा, you have access to so many other resources which can be done. So PubMed is one of the site which is actually PubMed Central, which is actually used by so many researchers to put the references, and you will find millions of articles there related to OCD. Some of the older articles are actually free. Some of the newer articles are not free. Pick up the older article, which is available free, the whole complete article, and pick up the new references of the abstracts of the study published recently in 5 years, and then match them. It will be easier. मैम थोड़ा सा लग रहा है ये मुश्किल है नहीं, क्योंकि रेफरेंसेस आपने 8 से 10 टोटल इंट्रोडक्शन के डालने, विच इज डूएबल. मैंने 4 पैराग्राफ्स बताए हैं आपको. 4 पैराग्राफ्स में 8 से 10 रेफरेंसेस आपके लिखे जाएंगे. Where sources are used, they should be listed at the end of the synopsis and you should be prepared to discuss them when asked. Well, हमारे यहाँ ये नहीं होता, इसलिए हम उसको करते नहीं. 5 से 15 references are absolutely fine. Cpsp prefers Vancouver style, जिसमें वो ऊपर छोटा सा एक हिंसा लिखा हुआ होता है, ठीक है. वो सबसे पहले ऑथर का नाम, उसके बाद उसकी जो स्टडी है उसका नाम, उसके बाद वो कहाँ पब्लिश हुई है उसका नाम, किस एडिशन में हुई है, सफ़ा नंबर कौन से कहाँ तक का है, और आखिर में साल जब वो पब्लिकेशन हुई है. ये रेफरेंसेस कोट करने का तरीका है, इसको वैंकूवर स्टाइल बोलते हैं. टेक होम मैसेजेस. Synopsis is the beginning. So always remember that your synopsis is the beginning of your research journey. And the beginners are not supposed to write philosophical papers. Beginners are supposed to write simple, straightforward 2-page of synopsis. It is an absolute requirement for official purposes. And the guidance is available usually around you. Short, very informative, brief, and whatever is coming to your mind. It is the representative of what is going, what you can defend by yourself. मैं ये कहता हूं कि रिसर्च करें और रिसर्च करके उसको सीधी सीधी पेपर में लिख दें. पहला पेज इंट्रोडक्शन का स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन उसके बाद वो जो बाकी टाइटल्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, रिसर्च में सेटिंग्स हैं कि कहाँ पे की रिसर्च, कितने मरीज लिए. यूजुअली ये भी एक सवाल बार बार पूछते हैं रेजिडेंट्स कि जी सैंपल साइज क्या होगा. सीपीएसपी सैंपल साइज कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाता है.
आमतौर पे जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और साइनॉप्सिस में कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड फॉरवर्ड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यू आर द बिगिनर इन रिसर्च, सो जस्ट कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रोज के 2 मरीज ऐसे देखता हूं, तो मैं अगर 3 महीने में डाटा कलेक्शन करूं तो 2 मरीज के हिसाब से 6 दिन हफ्ते के, 3 महीने के हिसाब से 36 दिन का मतलब ये कि 72 मरीज, 72 पेशेंट्स का डाटा सैंपल मेरे पास होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन, 3 महीने हैं, 72 से 100 हो जाएगा। 100 सैंपल साइज इज एक्सेप्टेबल बाय CPSP। सो जब आपने सैंपल साइज लिखना है तो कन्वीनियंट सैंपलिंग लिखनी है, और उसमें आपने 100 का सैंपल डाल। हाँ, अगर आपकी रिसर्च किसी ऐसे टॉपिक पे है जहां पे सैंपल साइज का एक अप्रोप्रिएट नंबर कैलकुलेट करके मेंशन करना जरूरी है, वहां आपकी मजबूरी आ जाएगी। लाइक some people do the research in translation and validation of a scale, whatever scale. Like recently, one of the trainee did a scale on substance abuse. So that questionnaire need to be translated and validated. So we need an actual sample size calculated on the basis of the number of the questions in that questionnaire, and then the sample size should be very absolute. But most of the time we don't do this kind of research study, so we don't need the calculation of the sample size. So convenient sampling is the acceptable norm by the CPSP if you're writing a synopsis related to a simple topic. I hope I'm clear about it. Any questions? सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया? नहीं सर, तो आप कह रहे हैं कि वो CPSP वाले सैंपल साइज बताएंगे, तो जब हम वो जो CPSP सबमिट कराने जाते हैं तो हम एक कोई हाइपोथेटिकल सैंपल साइज लिख के ले जाएं, बस उसको बाद में वो करेक्ट करवाते हैं? किसने कहा कि वो करेक्ट करवाते हैं? वो करेक्ट नहीं करवाते। वो करेक्ट CPSP वाले सैंपल साइज आपका करेक्ट नहीं करते। वो उस पर इतराज लगा सकते हैं बाद में कि आपने सैंपल साइज कितना कैलकुलेट किया, क्या क्यों कैलकुलेट किया, अदरवाइज वो कैलकुलेट करके नहीं देते। हाँ, कुछ केसेस में, मैंने कहा कुछ केसेस में, जैसे स्केल की ट्रांसलेशन एंड वैलिडेशन करनी है, या स्किज़ोफ्रेनिया में फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आप देख रहे हैं और फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में आप सिर्फ थॉट डिसऑर्डर को एलिसिट करना चाह रहे हैं, तो कुछ केसेस में यस सैंपल साइज की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। मेजॉरिटी में आपको जरूरत नहीं है। सो आप ऐसा सिंपल सादा टॉपिक लें जिसमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग एप्लीकेबल हो और आप वो लिख दें। मैंने पहले फाहदिस कहा, बार बार कह रहा हूं, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ बिगिनर, एंड बिगिनर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ऑन अ हाईवे at the speed of 140 miles per hour. Beginners are expected to know how to drive a vehicle. That's it. आपको इतना पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलानी। सेम इज हियर, आपको इतना पता होना चाहिए कि जी रिसर्च मेथडोलॉजी में ये चीजें होती हैं, ताकि जब रिसर्च पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आए कि हाँ जी ये रिसर्च पेपर कैसे पढ़ा जा रहा है। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप 370 का सैंपल साइज 3 महीने में इकट्ठा कर देंगे किसी ऐसी बीमारी में जो देखने को ही आपको महीने में 2 दफा मिलती है। कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। ज्यादातर CPSP प्रेफर करता है कि हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज हों। क्यों? इसलिए कि उनको पता है कि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, एक क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं। क्लिनिकल सेटिंग में काम करने का मकसद ये कि CPSP नोज वेरी वेल कि जी आप टर्शरी केयर सेंटर्स में ऑन एन एवरेज रोज के 50 से 100 मरीज देखते हैं, लेकिन वो आप अकेले नहीं देखते, आपके साथ एक टीम होती है, 4, 6, 7 रेजिडेंट्स होते हैं। सो आपके हिस्से में तो 8 से 10 मरीज आए, उन 10 मरीजों में से अगर ये बीमारी सपोजली 1% इन जनरल पॉपुलेशन है तो किसी दिन आई किसी दिन नहीं आई, तो सैंपल साइज तो मैंने बताया बड़ा सिंपल है, आपका 3 महीने डाटा कलेक्शन का टाइम है,
या 6 महीने डाटा कलेक्शन का टाइम, इससे ज़्यादा तो डाटा कलेक्शन का टाइम कोई नहीं रख देता ना, लिखता उसमें। उस टाइम में ऑन एन एवरेज कितने मरीज आप देखते हैं और कितने आपको मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे आप सैंपल साइज लिख दें और ब्रैकेट में लिख दें कन्वीनियंट सैम्पलिंग, दैट्स इट, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। और कोई क्वेश्चन? 4 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के, उसके बाद मेथडोलॉजी और उसमें सेटिंग्स वगैरह के सारे फिलअप्स, जरूरी चीज जो मैं मिस कर गया, सॉरी, स्केल। Whenever you are doing a research and writing a synopsis, you have to mention about the scale के आपने इस चीज को मेजर कैसे किया, ठीक है। उस स्केल की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि 3rd पैराग्राफ में आप थोड़ी सी देते हैं कि ये स्केल है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है, इसकी ये चीजें, और मेथडोलॉजी में भी उस स्केल के बारे में बताते हैं। कोशिश ये करें कि जो भी टाइटल या रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं उसका स्केल, पहली चीज, अगर तो वो इंग्लिश में है तो वो ऑब्जेक्टिव स्केल हो कि आप मरीज को असेस करके उसकी स्कोरिंग करते हैं। अगर उसने मरीज ने फिलअप करना है तो फिर वो स्केल जो है वो उर्दू में ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड वर्जन आपको मिल जाए। लाइक डिप्रेशन के बहुत सारे स्केल उर्दू में ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड है, वो आपको मिल जाते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। डिप्रेशन की फ्रीक्वेंसी देखनी है, एंजाइटी की देखनी है, कोई ऐसा टॉपिक अगर आपने चूज कर लिया है जिसका स्केल आपको उर्दू में ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड नहीं मिलता, और जो अंग्रेजी वाला स्केल है वो आप मरीजों को डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो ये एक आपके लिए मुश्किल और अजाब वाली बात है। कोशिश करें टाइटल सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो स्केल आपने इस्तेमाल करना है या तो वो उर्दू में अवेलेबल है या वो ऑब्जेक्टिव है, आप देख रहे हैं और असेस कर रहे हैं और लिख रहे हैं। मसलन बहुत सारे बच्चे साइनॉप्सिस में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, अपना एग्जांपल वही वापस देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ टर्शियरी केयर सेंटर, जो मैंने टाइटल दिए। मैंने येल ब्राउन की और पेडवा की मिसाल दी। पेडवा उर्दू में ट्रांसलेटेड है, वैलिडेटेड है, अवेलेबल है, कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिंपल डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है DSM-5 का या ICD-10 का, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे जो सवाल हैं उसके बेसिस पे कर देते हैं। मसलन डायग्नोसिस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ टर्शियरी केयर सेंटर्स ऑफ लाहौर, ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ DSM-5 और क्राइटेरिया आपने साथ एज अपेंडिक्स अटैच कर दिए। सो आपने मरीज से वो सवाल पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, मरीज से वो सवाल पूछने हैं और DSM-5 के सवाल हैं और डायग्नोसिस एज क्लिनिशियन बना देता है, इट इज एक्सेप्टेबल। वो स्ट्रेट अवे नल एंड वॉइड करके खत्म नहीं करेंगे उसको, सो वो एक्सेप्टेबल है, यू कैन यूज इट, यू कैन यूटिलाइज इट। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड एज अ methodology of assessing a patient. Similarly, again, बहुत सारी सिचुएशंस में एंथुजियाज्म तो बहुत है, हमारे अंदर भी बहुत था। हम कहते थे जी सीरम लिथियम लेवल्स हम पेशेंट से कराएं और देखें कि कितने पेशेंट को रिस्की है, टॉक्सिक लेवल स्टैब्लिश हो जाते हैं। मसला वो है कि कितनी लिथियम लिखी जाती है, कौन सा स्केल अवेलेबल है, मरीज को कहाँ भेजेंगे टेस्ट के लिए, टेस्ट के पैसे कौन देगा, 100 रुपए या 1500 रुपए का टेस्ट है, आपने 100 मरीजों के लिथियम लेवल्स देखने हैं, 15,000 रुपए का खर्चा कौन करेगा या 1.5 लाख रुपए का खर्चा कौन करेगा? पहले से CPSP नहीं चाहता कि आप पैसे लगाएं, ना आपको लगाने की जरूरत है। सो ऐसी कोई चीज आपने उसमें नहीं डालनी अपने साइनॉप्सिस में जहां पे खर्चा आए, पैसे लगें, क्योंकि CPSP एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप पल्ले से पैसे लगा के वो करेंगे। सो मैं कहता हूं, मैं देखना चाहता हूं जी कि क्लोज़ापिन के लेवल्स जो हैं वो पेशेंट्स में कितने होते हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। अब लेवल्स क्लोज़ापिन के करवाने के लिए मुझे पेशेंट को भेजना पड़ेगा लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी वाले मुझसे पैसे लेंगे, पैसे कौन देगा, कहां से आएंगे? सो ये इस किस्म की स्टडी ना करो तो बेहतर है। बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है तो कहीं से फंडिंग अरेंज कर लो,
और ये कर लो स्टडी। साइनॉप्सिस सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डूएबल, 4 से 6 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के और बाकी सारी फिलअप जो सीपीएसपी भी बताता है और आप लोगों को भी पता है। वो जो पिछले साइनॉप्सिस हुए हैं उसकी आपने कॉपी करनी है, उसके सारी हेडिंग्स आपने भरनी है और वो सारे वही करते हैं। एग्रीड? इट्स डूएबल, यू कैन गो फॉर इट। ये नकल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे रिसर्च कैसे शुरू करनी है, रिसर्च की बेसिक्स कितनी आनी चाहिए। एनफ? गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा सर, आपने कहा कि आप जो ऑब्जेक्टिव स्केल्स हैं कि आप पेशेंट से क्वेश्चन करो और पेशेंट जो आंसर दे आप उसके अकॉर्डिंग उसे कर लो, लेकिन ये तो फिर इसमें वो कि जी एक पेशेंट बीए पास है, वो मेरे क्वेश्चन को किस तरह कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, एक पेशेंट बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, वो किस तरह कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, तो इसमें फिर तो ये बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी। मैं या तो क्लैरिफाई मेरा कर कोई दूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, जब आप क्वेश्चनेयर उर्दू में ट्रांसलेटेड और वैलिडेटेड ढूंढ लेते हैं तो आपको आपका ये स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर आ गया, उसमें जरूरत नहीं है वो इसकी। तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहा ना जैसे क्राइटेरिया पढ़ के सवाल पूछ रहे हो, तो वो तो फिर नहीं, कभी मैं क्राइटेरिया उस पढ़ सवाल के को सवाल नहीं पूछना, वो कहीं नहीं मैंने बोला। क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल करना है। आप एज क्लिनिशियन अपने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपके पास डिप्रेशन का मरीज आता है, आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? बोलो, किस बेसिस? क्राइटेरिया की बेस। क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं, बस आपने यही मेंशन करना है। आपने ये नहीं करना अच्छा कि मैं ठीक है, मैं उससे समझ गया। क्राइटेरिया अच्छा के ठीक सवाल है, ठीक पूछूंगा, नो। है। ओके आपने ओके ओके। नोट में नहीं लिखना कि मैं क्राइटेरिया के सवाल पूछूंगा। आप कहेंगे जी क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ DSM-5 क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, दिस ठीक है, मैं वर्जन, समझ दिस ईयर, दैट्स इट। ये थोड़ी कहना कि ओके जी उसमें लिखा हुआ है वो मैं सवाल सारे मरीज से पूछूंगा और फिर आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है, DSM-5 का या ICD-10 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लगाना है और वहां पे मेंशन कर देना है, दैट्स इट। गॉट इट? ठीक है एनी जी अदर? सर जी। हाँ, लिख लोगे एक सफा? कोशिश तो कर लेंगे। नहीं, कोशिश नहीं कर लेंगे, अब लिख के तो मुझे अगले हफ्ते दिखाना है। टाइटल ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन, 5 से 6 पैराग्राफ जो मैंने बताए और बाकी सारे वो फिल इन द ब्लैंक्स के स्टडी सैंपल क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, स्केल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या हैं, रिजल्ट्स और कंक्लूजन क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इंशाल्लाह। गुड। चलो, लेट्स होप दैट दिस ब्रीफ presentation was useful for some of the people. फिर भी कोई सवाल हुआ, गेट बैक टू मी, ओके? Dr. चलो, Umair, could you please जी सर। stop recording? हाँ बिल्कुल मैं कर Sir, there's this